Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today we're going to discuss something that all the CLAT aspirants must know, which is the 5 writs given under the Indian Constitution. So I think all of you would know that when our Constitution was enacted or enforced on 26 January 1950, we had 7 fundamental rights. However, in 1978, by the virtue of the 44th Amendment to the Indian Constitution, one fundamental right was taken over. Okay, one fundamental right को हटा दिया गया था, it was scrapped and it was moved to a list of constitutional rights. ठीक है, so right to property was that right which was removed from a fundamental right to Article 300A of the Indian Constitution, wherein it is now a constitutional right. Now, all of you would know that we have the right to equality, we have right to freedom, we have right to religion, we have cultural educational rights, right against exploitation. So these are first 5 rights of the Indian Constitution. 6th right is the right to constitutional remedies. Now the Constitution says that if anybody's fundamental rights are violated, they can either go to the High Court or the Supreme Court to enforce their rights. ठीक है, क्योंकि ये fundamental rights have been given to them by the Constitution and even the Parliament cannot take away these rights from them. Now the question is, when you are asked to go to a court, when your first 5 rights are violated, 6th right talks exactly about that. That is why 6th right को बहुत ज़्यादा importance दी गई Indian Constitution में. In fact, our drafting committee's chairperson, Dr. B.R. Ambedkar, called these rights as the heart and soul of the Indian Constitution because इस 6th right के बिना first 5 right will absolutely have no meaning. So it's the 5th right है ना, under Article 32 of the Indian Constitution. There are 5 writs given under this article. और वो 5 writs कौन सी होती है, that is what we are going to discuss today. तो ये जो writs होती है, it can be taken or it can be filed in a High Court as well as in the Supreme Court of India. So under Article 32, it goes to the Supreme Court, whereas under Article 226 of the Constitution, it goes to the High Courts, various High Courts in separate states, right? So now let's move on to the kinds of writs and what do they actually mean. So the first kind of writ that we're going to talk about today is the writ of habeas corpus. Now what exactly habeas corpus is? Habeas corpus का मतलब होता है to have a body. इसका actual मतलब होता है to have a body. Now what does this mean? It means that if somebody is illegally detained, ठीक है, मान लो पुलिस स्टेशन में किसी को जबरदस्ती पकड़ लिया है एंड आपको पता होगा एक बेसिक सा रूल होता है that once somebody is arrested by the police or you could say detained by the police, that person is to be produced in front of the nearest district magistrate within 24 hours. 24 hours के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है. अगर मान लो पुलिस ऐसा नहीं करती है देन इट अमाउंट्स टू इलीगल डिटेंशन. ठीक है, अगर पुलिस ने 24 घंटे तक आपको नहीं प्रोड्यूस किया तो वो इलीगल डिटेंशन हो जाता है. तो वहां पर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन गो टू एनी हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट वी वांट टू फाइल अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस बिकॉज द पर्सन हियर हैज बीन डिटेन्ड इलीगली. इसको कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. Second writ we are going to talk about is the writ of mandamus, and mandamus is the most widely used writ here. Mandamus क्या होता है? Mandamus का actual मतलब होता है to command. Now what to command? So mandamus can be issued by a superior court to an inferior court or to inferior tribunals या फिर कोई भी administrative tribunals under the state or the central government. तो basically कोई भी ऐसी authority which has been managed by the central or the state government, writ of mandamus can be issued against that particular body. और ये मैंडेमस का रिट करता क्या है? इट बेसिकली कमांड्स दैट बॉडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगेन. फॉर एग्जांपल से देयर इज अ हेरिटेज गार्डन इन माय एरिया, ओके, एंड दैट गार्डन जिसमें मुझे पता है कि वहां की जो सैंक्शनड एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है दैट इज 50. गवर्नमेंट ने सैंक्शन करी है एंड 50 लोग वहां पर काम करने चाहिए. नाउ से देयर आर ओनली 10 पीपल वर्किंग देयर राइट नाउ एंड बिकॉज ऑफ दैट द गार्डन इज इन रियली बैड स्टेट. अब क्योंकि वो इतनी खराब हालत है उस गार्डन की, इट ऑब्वियसली नीड्स मोर पीपल फॉर इट्स अपकीप. आई कैन गो टू द हाई कोर्ट, क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूं, आई कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड फाइल अ रिट ऑफ मैंडेमस रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू गाइड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और आई वुड से कमांड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू यू कुड से एम्प्लॉय मोर पीपल इन देयर. ठीक है, वहां पर और एम्प्लॉयज को आप कह सकते हैं यू कुड अपॉइंट मोर पीपल एंड वहां पर उस गार्डन की अपकीप को और प्रॉपर्ली रखा जाए. तो अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, राइट, इट कम्स फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू दीज काइंड ऑफ अथॉरिटीज. नाउ द थर्ड रिट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द रिट ऑफ सर्चोररी. अब रिट ऑफ सर्चोररी में क्या होता है? इट ऑल्सो गोज फ्रॉम अ हायर कोर्ट
to a lower court, or you could say from a superior court to an inferior court. But this writ happens after an order has been made by any of the inferior court. तो किसी inferior court ने ऐसा order दिया है which is, you can say, opposed to natural justice, which was outside his jurisdiction, then a writ of certiorari can be filed. और आप हाई कोर्ट या फिर उससे सुपीरियर कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कुछ गलत किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, एंड यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर डिसीजन और ऑर्डर हैज बीन मेड एंड इट्स बीन मेड आउटसाइड द jurisdiction ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट. Now the fourth kind of writ is the writ of quo warranto. Quo warranto का एक्चुअल मतलब होता है by what authority. By what authority इसका क्या मतलब है? तो कोई भी इंसान, if any person you feel is holding a public office without that person, you could say, being eligible to that office. For example, all of us wants to go to NLUs. तो NLUs में registrars होते हैं, ठीक है? Registrars are appointed by certain authority. अगर आपको लगता है कि कोई रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट हुआ है एंड दैट हैज नॉट बीन डन प्रॉपर्ली बिकॉज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो नहीं मीट हो रही हैं यहाँ पे, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड यू कैन फाइल अ रिट ऑफ क्वो वारंटो. देन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जिसमें आपने रिट फाइल किया है वो वहां पर क्वेश्चन करेंगे कि बाय व्हाट अथॉरिटी हैव यू एम्प्लॉयड और अपॉइंटेड दिस पर्टिकुलर पर्सन टू दिस पर्टिकुलर जॉब. Now the fifth or the last writ that we're going to talk about today is the writ of prohibition. अब prohibition के नाम से ही पता चल रहा होगा. अब क्या होता है, हम बहुत बार सर्शोररी और प्रोहिबिशन को कंफ्यूज करते हैं. सर्शोररी का बहुत सिंपल सा मतलब है कि वो सुपीरियर कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट में जाती है जिसके ऑर्डर होने के बाद. वेयरएज प्रोहिबिशन में क्या होता है, प्रोहिबिशन अब एक स्टेप अहेड है सर्शोररी से. उसको आप जब चलते केस में है ना, व्हेन देयर इज एन ऑनगोइंग केस, यू कैन एक्चुअली फाइल अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इन एनी सुपीरियर कोर्ट and ask that particular court or request that particular court to please pass a writ of prohibition, because जो एक inferior court है, that inferior court is operating out of jurisdiction. It is operating in excess of jurisdiction. So you can file a writ of prohibition before a case is decided or an order is given by any of the inferior courts. So these are the 5 writs. If you have any other doubt, feel free to mention in the comment box. Other than that, I think you would know that I've been teaching on Unacademy as well. I've been taking a lot of classes on legal reasoning, on current affairs and a lot of other matters in there. So I'll be very happy to guide you there. ठीक है, आप current affairs वगैरह के लिए मेरी classes definitely attend कर सकते हो. You can in fact take a subscription on Unacademy for all my classes. In fact, one subscription will give you chance to see or watch the classes of all the other educators. जो नई classes हैं वो भी और जो पुरानी recordings हैं वो भी आप देख सकते हो. You can be prepared well for CLAT or ALET, जिस भी साल के लिए आप prepare कर रहे हो. ठीक है, you can in fact use my code Keshav Live or Malpani and get 10% off on all the subscription on Unacademy. That's it about the session from my side. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much.